We all know that without soil, there's no life. And since 2014, as passed by the United Nations Assembly, we are organizing this World Soil Day in order to bring an awareness that without soil we can't have life. हाँ, उसके बाद में ये गोबर एक्चुअली ये गोबर ना थोड़ा सा ड्राई हो गया. नॉर्मली गोबर का 10-15 दिन का पुराना माने गीला भी नहीं होना है, जब ड्राई भी नहीं होना है. जो एक 15 दिन होते ऐसे छू सकता है ना, वो स्टेज में होना चाहिए. तो वो स्टेज में गोबर लेके आपका यहाँ पे 3 बैग 4 बैग वो कब डालना है, आज पूरा भर्ती नहीं करना है. हाँ, कोई टेक्नोलॉजी में दिखाता है एक ही बार भर्ती कर देता है, एक ही बार लगा देता है, वो नहीं. हाँ, तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करेगा. आज हम लोग 5 बैग का तैयारी किया. उसके साथ में ये कोल का ना, जंगली कोल का हो सकता है, घर का कोल खा के जो फेंका वाला हो सकता है, और आपका घर का नज़दीक है तो आपका किचन वेस्ट भी डाल सकता है. हाँ, किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं इस पर आप, क्योंकि केचू तो उसका एनी गीला चीज़ को खाता है. डिकम्पोज जो भी होता है ना, जो डिकम्पोज होता है वो चीज़ को खाता है केचू, और उसे टट्टी करता है, वही कंपोस्ट है. हाँ, वही कंपोस्ट है. तो हम लोग इसको क्यों रिकमेंड करता है बोलने से, इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत होता है. मॉइस्चर कंटेंट, हाँ, तो उन लोग को बर्म को केचू को थोड़ा गीला एरिया जहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे उसका अच्छा लाइफ होता है और अच्छा जीता है, और उसका फंक्शन ज़्यादा अच्छा होता है, उसका ना काम अच्छा एक्टिव होता है. तो इसलिए हम लोग इसको रिकमेंड करता है. First of all, I like to wish all the viewers of Arunachal Mirror and people of Arunachal Pradesh happy World Soil Day. We all know that without soil, there's no life. And since 2014, as passed by the United Nations Assembly, we are organizing this World Soil Day in order to bring an awareness that without soil we can't have life. And with the poor soil, entire civilization has, civilization has lost. You may think of any other civilization, including the Middle East, some of the Asian countries also. The big civilization they have lost. The people had to shift from one place to another because soil is not supporting them. The soil is no more sustainable in meeting the requirement of the people. So for that, to have an awareness, this World Soil Day is being organized. Today you can just see the theme, keep the soil alive and protect the biodiversity. So in the case of soil is, we consider soil as an alive entity because soil is not alone. With the soil we have microorganisms, we have rodents, we have termites, we have earthworms, lot many things are there, fungi is there, algae is there. All these things contribute in the having an organic and also increasing the organic matter, increasing the organic matter. And apart from that, this soil, when it has lots of activities, this also take part in terms of in global changing, because 2000, it is considered that 2500 gigatons of carbon can be stored in the soil. So it has a great role in carbon sequestration. That way, having a healthy soil also helps in takes part in the climate change. So in order to have an healthy soil, we are giving this awareness. Apart from that, before I could conclude, the old saying that goes, a poor soil makes a farmer poor and a poor farmer makes a country poor. I think with this, the viewers of
Arunachal Mirror and other print media would know that how important the soil is. With this,